हेलो फ्रेंड्स, पावर एक्सपेरिमेंट्स में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे कॉक बॉटल रॉकेट गन, जो कि देखने में बहुत ही सिंपल है मगर है बहुत ही खतरनाक। इसके लिए हमको चाहिए एक बॉटल और एक लाइटर, जिसको कि हम निकाल के यूँ ये निकालना है स्विच, जिससे हम जलाते हैं इसको। जैसा कि आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार होता है। इसका हमको कोई यूज़ नहीं है। इसको अलग करते हैं। और चाहिए एक पीवीसी पाइप, तकरीबन 2 फुट से 3 फुट के बीच में, और रबिंग एल्कोहल, जिसको हम नेल पॉलिश रिमूवर भी बोल सकते हैं, और टेप और कुछ वायर्स। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number. Fuel. जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने सब पूरे पे टेप लगा दिया है। और ये रहा लाइटर, जिसको हम यहाँ पे प्रेस करते हैं तो कुछ इस प्रकार की चिंगारी निकल। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, ये गन तैयार हो चुकी है। इसको यहाँ से चलाना है, इसको बोतल के इसके अंदर फंसाना है यूँ करके। मगर उससे पहले इसके अंदर हमको रबिंग एल्कोहल, जो कि आप इसको नेल पॉलिश रिमूवर भी बोल सकते हैं, ये रहा, इसको इसके अंदर डालना है। उसके बाद इसको ऐसे लगाना है। उसके बाद सीधा फायर, भूं। जैसा कि आप देख सकते हो, ये रबिंग एल्कोहल, जिसको कि हम नेल पॉलिश रिमूवर भी बोल सकते हैं। और ये है खाली बोतल, बिल्कुल एम्प्टी। हाँ, मगर एक बात का ध्यान रखें, ये सब करने से पहले बोतल के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हो, बिल्कुल। चलो इसको इसके अंदर डालते हैं, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, कम से कम बस इतू सा, जैसे कि आप देख सकते हो, कम से कम। चलो इसको बंद करते हैं।
यूँ करके हिलाना है, ढंग से हिलाना है जिससे कि अल्कोहल पूरी बोतल के अंदर भर जाए, यूँ करके सही से। चलो अब ट्राई करते हैं।